सामान्य रूप से बहुत सामान्य बातचीत की भाषा में चर्चा में स्वीकार नहीं किया जाता है। और आज का टॉपिक है मीटिंग डेथ, मृत्यु से मुलाकात। तो आइए शुरू करते हैं हितेश वशिष्ठ के साथ। इसके बाद हम लोग अपनी शेयरिंग करेंगे। Good evening. So, welcome to today's meditation. सर वीडियो बंद हो गए हैं। एक मिनट। Day 19 of our 40-day meditation program. Every day we come together. Every day we create that collective field to lift our energies. And it is so wonderful to meet every evening and, meditating, enjoying together. That is so great. So friends, while some of our friends are still joining, I have another question for you today. And well, before I share the question, I would want all of you, like yesterday, to be spontaneous in your answer. Don't think much about it, because when you think much about it, we begin to put in a lot of logic to it. And we have to learn to surpass this logic. That is how we learn the language of our soul. So I hope you're ready for this question. And my question is, if you are given a chance to take one thing with you when you die, what would that be? Love, peace, silence, awareness, nothing, memories, love, gratitude, don't know, adhyatma, bliss, parents, memories, my goodness. That's wonderful. Sadhana, shunya, gratitude, love, Guru's blessings. Amazing. Such wonderful, wonderful sharings all of you are doing. Good name, memories, learnings, continuation, blessings, peace. Wow. That is so beautiful. Moksha. Wow.
spirituality, peace and love, respect, good karma. Excellent, excellent, dear friends. It is so wonderful to read all your responses. Well, friends, the reason that I have asked you this question because it gets us to the topic for today's meditation. It is about death. And well, I chose this topic because I feel that in the recent past, almost everybody has, come closer to death. In a way, they have lost their loved ones, or somebody, have kind of touched that moment of vacating and then have revived. So there have been many different sorts of death experiences that we all have had in the recent times. And when the name of death is being taken, with death comes the fear. We feel fearful of death. And why fearful? Because death brings uncertainty. We don't know what is going to be there on the other side. We don't know how much painful will that be. We don't know what happens after death. So all these things kind of adds into the uncertainty which is associated with death. If we wish to heal our fear of death, we must know death. We must learn to sit with death. We must learn to be friends with death. Many of us feel that death is leading us to feel the separation with our loved ones. But here I would like to intervene and would mention that death is about embracing your own eternalhood. It is about living that eternalhood that is with you. So, to gain the understanding about death, we must know what is the journey of the soul. And our great teachers, Dr. Newton, Dr. Lakshmi, I'm sure all of you must have attended the other sessions with them, and how beautifully they have shared and enlightened us as to how is the journey, forward when we meet death. Well, friends, Upanishads mention that there are 3 courses of that a soul follows when it goes for a death, when it experiences death. The very first course is called Devayana. Devayana. So this course is basically followed by those souls who have been serious in their journey of self-realization. Those who have meditated, those who have always, brought focus on accumulating jnana by, Shravan, Manan, and Nididhyasa, doing all these things together. And those who are always busy in seeing the real essence in everything. That is the one, that is the being who follows the path of Devayana. Because as soon as they vacate the body, they are ready to move. They are ready to go. They are not bothered by what is happening behind. What have they picked up? What have they not picked up? What is with them? What is not with them? Where to go? Where not to go? Because they know that this is not the first time that the death is being experienced by them. So Upanishad says that they follow the northward movement. They move towards the north. And when they move towards the north, it is like
entering into the Brahmaloka. They have an entry to Brahmaloka, and nothing stops them. No emotion of their loved ones, nothing can stop them to, to follow, the path of going into the Brahmaloka. On the contrary, there is another path which we call as Pitrayan, which means the path that moves towards our ancestors. And the way you have a Brahmaloka, you have a Chandraloka. So Chandraloka is the one where we get in along with our desires, along with what all we've done, all the good things that we've accumulated. And we enter that Chandraloka to seek the pleasure out of all the good things that we have done. Now, once we have used that pleasure, we again come back. We return to earth to live another life. Brahmaloka has path of no return. That is why it is said that it is a path of liberation, mukti. It is like there's no obligation for you to come. You can come to serve, to have fun, to enjoy. That is what you come for. And the third path is called Adhogati. Adhogati is the path wherein it is followed by people who are, who have been busy in their thought processes, those who were clutched by their limiting beliefs, patterns, those who were busy in violence, in creating upheavals, not only for self, but for others, which we also term as hell. That is the path wherein they are drawn to. And that we call as Adhogati. So friends, Devayan and then Pitrayan. Pitrayan is the path of south. We call it Dakshinyan. You move towards the south. And then Adhogati. So these are the three paths that have been created. So when we meditate, meditation gives us a flavor of death. It gives us a little practice. It's kind of a preparation it gives us. Why? Because meditation helps us to grow surrender in us. And death needs surrender. If you're not able to surrender in the moment when death meets you, it's going to be tough. And if you haven't practiced surrender in life, how can you practice surrender in the last moment? It's going to be tough. Which is why we all must learn to trust surrender to life, surrender to breath when we meditate. That kind of prepares us for the journey ahead. Well, friends, I asked you this question, that what is that one thing which you would like to take along with you when death comes to you? For a Devayana person, that one thing is no think. Nothing. Because if you wish to take something along with you, even your good deeds, you're getting yourself attached to your good deeds. And that becomes the reason for you to bring to the world of cause and effect. Every cause leads you to effect. So which is why once we vacate this body, then we don't have to look back. We follow the path of Devayan. That means all that has happened, all the good things that I did, I leave it here. I let it be. And that is how we move ahead. So friends, today's intent for meditation is going to be having a kind of a great meetup, a kind of a rendezvous with death. So that if there are fears that are attached with respect to death, we are able to let go of it. So on this note,
I would like you all to give me a thumbs up if you're ready, or write in the comment section, yes. Yes, and I'm ready to experience death. Yes, I'm ready to experience death. Wonderful. Excellent. So once you're ready, तो आज के टॉपिक पर संक्षेप में उसकी पृष्ठभूमि को हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा गीता मैडम को कि संक्षेप में उसको स्पष्ट करें, फिर हम लोग मेडिटेशन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। गीता मैडम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, धीरे आवाज है आपकी। अभी कैसे? अभी भी थोड़ी धीरे है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक। आज का विषय मृत्यु से मुलाकात। शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय, लेकिन सबसे नेग्लेक्टेड विषय भी। हितेश वशिष्ठ ने प्रश्न से आरंभ किया था। वो प्रश्न हम भी स्वयं से पूछें कि मृत्यु के समय हम अपने साथ क्या ले जाना चाहेंगे। कोई एक चीज अगर हमें चुननी हो तो हम क्या ले जाना चाहेंगे? मैं चाहूंगी यहाँ उपस्थित दोनों मित्र उस समय जो पहली बात मन में आई हो वो क्या यहाँ शेयर करना चाहेंगे? मैडम, आपकी बात से तो मुझे समझ में आया कि हम आनंद को ले जाना चाहेंगे, उत्साहित हो, आनंदित रहें। किसको? आनंद, अपने स्वयं में आनंद हो, आनंदित रहें। ओके, डॉक्टर रवि से यही प्रश्न, क्या ले जाना चाहिए? अच्छे अनुभव, गुड एक्सपीरियंसेस। अच्छे अनुभव साथ ले जाना चाहेंगे। संयोग की बात है कि ठीक इसी क्षण उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, एक प्रश्न हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, मृत्यु के समय हम क्या अपने साथ ले जाना चाहिए? मैम नमस्ते। नमस्कार जी मैम। जी, आज के डिस्कशन का विषय है मृत्यु से मुलाकात, मृत्यु से साक्षात्कार। और हितेश वशिष्ठ जी ने पहला ही प्रश्न पूछा कि मृत्यु के समय हम अपने साथ क्या ले जाना चाहेंगे। बस मैम इसका उत्तर तो अलग अलग तलों के लिए अलग अलग ही है। तो आपके जहन में जो पहली बात आती है? मेरे लिए तो ये सोचना ही व्यर्थ है क्या ले जाना है, और बस यहाँ खाली होने के लिए आए हैं। जो भी समय मिले हैं 70, 80, 50 साल, बस कितना खाली कर सकें उसके प्रयास रहना चाहिए। योग के मार्ग में मेरा तो अनुभव यही कहता है, ले जाने के अभी से हमें कोई ऐसे आशा बनानी नहीं चाहिए। हमें तो खाली करने को सोचना है। जब नियम में कुछ लेकर नहीं आए थे तो लेके जाना क्या। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। आगे हितेश वशिष्ठ ने कहा कि हम मृत्यु से बहुत डरते हैं। अब डरते क्यों हैं? उसकी वजह है मृत्यु से जुड़ी हुई अनिश्चितता। हमें पता ही नहीं होता मृत्यु कैसे आएगी, कब आएगी, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, उस समय हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति क्या होगी, हमें कुछ नहीं पता होता है। उससे जुड़ी हुई ये जो अनिश्चितता ही है, ये शायद भय का सबसे बड़ा कारण है।
तो अब इस अनिश्चितता से बचने के लिए क्या किया जाए? इस अनिश्चित हम उसके प्रति होते हैं जिससे हम अपरिचित होते हैं, तो क्यों ना हम मृत्यु से परिचित हो जाएं, क्यों ना हम मृत्यु से मैत्री कर लें, क्यों ना हम मृत्यु को मित्र बना लें। जबकि हमने क्या किया है कि हमने तो मृत्यु से दूरी बना रखी। आज का जो ध्यान प्रयोग होगा वो मृत्यु के नजदीक जाने का होगा, मृत्यु से मित्रता का होगा। इसके बाद हितेश वशिष्ठ की ही बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा उपनिषदों के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 3 मार्ग उसके सामने हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने 3 प्रकार से वो अपनी आगे की यात्रा तय कर सकता है। उनमें से पहला उन्होंने कहा देवयान। अब देवयान यानी इस मार्ग से जाने वाला जो व्यक्ति होगा उसकी यात्रा उत्तर दिशा की ओर और उसे सीधे एंट्री ब्रह्मलोक में मिलेगी। उसे कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे ब्रह्मलोक की ओर जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति कौन होगा? जिसने अपना जीवन होश पूर्वक किया है, जिसने अपना जीवन ध्यान पूर्वक किया है, जिसने अपने जीवन में इच्छाओं का अंत कर लिया है। और यहाँ जो प्रश्न शुरुआत में पूछा गया था कि आप अपने साथ क्या ले जाना चाहेंगे, तो जो अपने साथ कुछ नहीं ले जाना चाहेगा वो शायद इस मार्ग का यात्री होगा। दूसरे मार्ग की चर्चा करते हुए हितेश वशिष्ठ ने कहा कि दूसरा मार्ग है पितृयान। इसकी दिशा दक्षिण की ओर होती है, यानी इस दिशा का जो यात्री होगा वो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। और जैसे ब्रह्मलोक है उसी तरह से पितृलोक है, तो उसकी जो यात्रा होगी वो पितृलोक तक होगी। अब ऐसा व्यक्ति होगा कौन? ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन जिया तो सुंदरता से है, लेकिन जिसके जीवन की इच्छाओं का अभी अंत नहीं हुआ है, जिसके जीवन में आकांक्षाएं वासनाएं अभी शेष रह गई। तो वो यहाँ से जाने के बाद पितृलोक में जाएगा, उसका अंग बनेगा, उसमें अपना कुछ समय सुखपूर्वक बिताएगा और उसके बाद पुनः जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आएगा। इसके बाद जो तीसरा मार्ग कहा गया, तीसरी जो गति कही गई वो कही गई अधोगति। और इस पर जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा जिसने अपना पूरा जीवन हिंसा में, व्यसनों में, विषयों में बेहोशी पूर्वक बिताया है। वो व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हुए, जिसको नरक कहा जा सकता है, हेल कहा जा सकता है, वो वहां पहुंचेगा और वहां पहुंचने के बाद वो अपने कर्मों का भुगतान करेगा और उसके बाद में फिर अपने कर्मों के अनुसार किसी योनि में इस पृथ्वी पर फिर आएगा और जन्म जन्मांतर के चक्कर काटेगा, जब तक कि वो देवयान का अधिकारी होकर सीधे ब्रह्मलोक में नहीं पहुंच जाता है। इसके बाद हितेश जी ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही, जो सबसे जरूरी है इसलिए वो ये है कि हम अपने जीवन में समर्पण करना सीखें। मृत्यु हमारे लिए आसान हो सकती है अगर हम स्वयं को मृत्यु को सौंप दें, लेकिन हमें तो अपने आप को सौंपना आता ही नहीं, हमें तो अपने आप को छोड़ना आता ही नहीं। हमने तो अपने आप को पकड़ रखा है, हमने तो अपने आप को जकड़ रखा है। और अगर हम ये सोचें कि जीवन में हमने छोड़ने का अभ्यास नहीं किया, हम तो मृत्यु के समय पे सीधे स्वयं को छोड़ देंगे मृत्यु के हाथों में, तो वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें स्वयं को छोड़ने का अभ्यास जीवन में ही करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा? हम जीवन के प्रति स्वयं को समर्पित कर दें। हम जब ध्यान करें तो हम श्वास के प्रति स्वयं को समर्पित कर दें। हम जब कोई कार्य करें तो हम उस कार्य के प्रति स्वयं को समर्पित कर दें। यानी जीवन में हर क्षण अगर हम स्वयं को छोड़ना सीख लें तो शायद मृत्यु के समय हमारे लिए स्वयं को छोड़ देना आसान हो जाएगा और फिर मृत्यु हमारी शत्रु नहीं, हमारी मित्र बनी रहेगी। तो ये छोड़ना कैसे हो, ये छोड़ना कैसे सीखा जाए, मृत्यु से मैत्री की जाए, यही हमारे आज के ध्यान प्रयोग का विषय है।
तो अब हम श्री हितेश वशिष्ठ के साथ इस यात्रा पर आगे चलेंगे और इस यात्रा का जो साधन होगा हमारा वो आनापानसति ध्यान मुख्य रूप से, जिसमें आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के प्रति समर्पण, हाथों की उंगलियों को आपस में बांध लेंगे, गोद में रख लेंगे, जमीन पर या बिस्तर पर बैठे हैं तो पालथी मारकर सुखासन में आ जाएंगे, कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस करके पैरों में से छोटे चप्पल निकाल के अपने पैरों का धरती से संपर्क स्थापित होने देंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और स्वयं को छोड़ देंगे। तो छोड़ने की इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आज छोड़ना सीख लिया तो शायद अंतिम समय में स्वयं को छोड़ देना हमारे लिए आसान होगा। तो इस यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं मृत्यु से मुलाकात के लिए। I'd like you to put your feet on feet, clasp your hands and make them rest in your lap, and gently, softly close your eyes. I would like you to take 3 long, deep breaths, breathing in from your nose. Hold it for a while and breathe out from your mouth. Breathing in a long, deep breath in and breathe out from your mouth. Those of you who are wearing glasses, I would like you to please take off your glasses. Yes. And connecting with your normal, natural, soft, peaceful, tranquil breath. Every breath which is coming in your body is bringing to you a lot of peace. And relaxation. And the breath that goes out takes out all the stresses, all the discomfort out of your body. Every day we are meditating. Every day we are deepening our friendship with the Shwasa, the breath. Every day we are growing our roots in meditation. Every day we move a step deeper, closer to the Supreme Being in us.
the Atman, the Brahman in us. Just be. Instead of driving your breath, I would like you to let the breath drive you. Allow yourself to surrender to breath. And when you surrender to breath, you're watchful of your breath. And you let it follow its own pace without any urge to control it. श्वास पर नियंत्रण नहीं, श्वास को अपनी गति से चलने दे। श्वास ले नहीं, श्वास को आने दे। श्वास के प्रति समर्पित हो जाए। I am ready. I am ready to meet death. कहीं मैं तैयार हूँ। मैं मृत्यु से मिलने के लिए तैयार हूँ। If there is any part of the body that needs even more relaxation, you may like to take a deep breath in that area and allow it to be infused with this healing energy in the breath. शरीर के किसी भी भाग में अगर तनाव है तो गहरी सांस लें और अपनी श्वास में उपस्थित प्राणवायु के माध्यम से उसका उपचार करें, उसको रिलैक्स्ड होने दें। Whether the body feel heavier or lighter, it carries ease. And in that ease,
the stillness appears. शरीर में चाहे हल्कापन महसूस हो रहा हो या भारीपन, सहज श्वास के साथ विश्राम और फिर शांति का उदय होता है। Surrender. 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 स्वयं को छोड़ दें। And while your body grows the stillness, your mind begins to absorb that stillness too. जब शरीर में शांति उत्पन्न होने लगती है, A state of relaxation. मन पर भी उसका असर होने लगता है, मन भी विश्रांत होने लगता है। A state in which no thoughts bother you. फिर कोई विचार परेशान नहीं करते, Because you don't engage in any conversation with them. किन्हीं विचारों के साथ अनुरक्ति नहीं होती। Just be. Touching the very depths in your practice. Where nothing disturbs you, nothing distracts you. ध्यान के गहनतम क्षणों का अनुभव करें। अब कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। Remain in the state
of Sat Chit Anand. सत चित आनंद की अवस्था का अनुभव करें। Everything is testing your surrender, dear friends. Just surrender. आपके समर्पण की परीक्षा का क्षण है। In the absolute state of nothingness. कुछ नहीं होने की स्थिति। Now at this moment, I would like you to remind yourself that you are just left with countable breaths. Those many breaths that can be counted on your fingers. इस क्षण ये भाव करें जैसे आपके पास सिर्फ गिनती की It is सांसें the बची हैं। time for you to vacate your mortal coil. और इस भौतिक शरीर को खाली करने का समय आने वाला With है। your physical sheath. शरीर को छोड़ने का समय नजदीक While है। you are left with a few breaths, I want you to notice your state of mind. जब ये पता चले कि गिनती की ही सांसें मौजूद हैं, तो ऐसे समय मन में क्या चल रहा है? Lord Krishna in Bhagavad Gita says that our last fixation of thoughts before we vacate the body gets us into
the new circle or frees us from the circle? What is the state of our thoughts as we vacate this body? Is it भगवान श्री कृष्ण smooth ने भगवत गीता में कहा है to vacate the body? Is it fearful? Is it tough? I'd like you to जिस अंतिम experience विचार के all साथ हम that. अपना शरीर छोड़ते हैं उसी के साथ शरीर ग्रहण करते हैं। ठीक इस समय सोचें हमारे भीतर क्या चल रहा है। Remember, भय, चिंता, that you are on the path of self-realization. So we use our self-realization in this moment when we are vacating the body. और यही क्षण आत्म साक्षात्कार का भी होता है जब हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं। Vacating your body. And when you vacate the body, these are the very first moments of your realization. I'd like you to notice, are you still alive? If you are alive, अपने शरीर में है what has died? What in you has experienced death? क्या है जिसकी मृत्यु होती है, क्या है जो मृत्यु का अनुभव करता है। This experience brings us the realization that death means letting go of your physical body, only that much. Because the one who is born with the body will die. And the one who dies will experience a rebirth. And this fact is inevitable. यही यह ज्ञान होता है। Then where is the जिसे question छोड़ा of है वो grief? शरीर है। Where is the question of separation? जिसकी मृत्यु हुई है उसे पुनः जन्म ग्रहण करना है, तो फिर अलगाव कहाँ हुआ। I'd like you to see, feel that how your dead body is being taken to the cremation ground for its last rites. देखें और महसूस करें कि मृत्यु के बाद आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है। Moment right now is a realization for you, dear friends. How the physical body
is being put on those 4 shoulders and being taken for the last rites. 4 कंधों पर आपके शरीर को कैसे शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा है। देखिए, And then you experience the process of the last rites. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का अनुभव करें। What you considered to be you is now turning into ashes. जिसे आप समझते थे कि मैं हूं, वो तो आग में जलकर राख हो रहा है। Is this me? Are these ashes are what I call as me? क्या ये राख मैं हूं? And I notice all my loved ones if I am alive, if I can listen to all that they are busy with at the time of my death, अपने प्रियजनों को then देखिए, who are they crying for? वो क्या कर रहे हैं, वो And I किसके am लिए रो not रहे हैं। dead. Are there desires, the unfulfilled desires that are birthing from within at this moment? क्या कोई ऐसी आकांक्षाएं रह गई हैं जो पूरी नहीं हुई हैं? I let them be. And I follow the soul's path of Devayana. I follow the path of sun. आत्मा को सूर्य I के मार्ग follow the path
देवयान No की ओर return. जाते हुए देखे। It is the path of reaching to the source, to the very end, इस मार्ग पर चलते and हुए touching आत्मा that अपने परम स्वरूप तक पहुंचे, Hiranyagarbha. उसे हिरण्यगर्भ का स्पर्श कर सकेगी, जिससे हम सभी Golden की उत्पत्ति हुई cosmic है। egg. Where I leave everything behind. A path which is beyond time, beyond Kala. सब कुछ पीछे छोड़कर उस कालातीत मार्ग की ओर। And how effortlessly today I enter this Hiranyagarbha. Although I'm there, even if I know or don't know. Now the realization becomes immensely effortless. सहजता से हिरण्यगर्भ में प्रवेश। This is the place of nirvana, liberation. यही मुक्ति की स्थिति है, Where we don't even निर्वाण की bother स्थिति। to take along our goodness. We left it. We left it completely. सब कुछ पीछे छूट गया है। And in these very moments, welcome all the insights that you're receiving through this journey of experiencing death. मृत्यु के इस अनुभव की यात्रा में What realizations have gone deeper देखिए from क्या this हो रहा है आपके journey in भीतर, you? क्या अनुभव कर पा रहे हैं। It could be a word, phrase, a subtle understanding. Just allow that
understanding, that realization to surface. जो भी विचार भीतर उठ रहे हैं उनको सतह पर आने दें। शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर भी। Being that supreme pure consciousness which is eternal. चेतना के शुद्धतम स्वरूप का अनुभव करें। I am eternal. अनुभव करें। And therefore मैं there is no अनंत हूँ। question of being born or being dead. Because the birth and death is related to body. मेरी चेतना जीवन मृत्यु से परे है, ये सिर्फ शरीर से संबंधित है। I am not the और मन body. I am the one that shines through the body. मैं शरीर नहीं हूँ। I am the one that shines through the mind. I am the soul. मैं आत्मा हूँ, जगमगाता हुआ प्रकाश। And at this moment, if any of us in the recent past have lost a loved one, I would like you to set them free from all the bondages and the ties that we've kept to them. Set them free because we know how important it is to आप follow इस the दुनिया path से of the विदा soul, ले चुके to अपने किसी experience को अगर Devayana. स्वयं से बांध रखा है तो उसे मुक्त कर दे, Set them free. उसे जाने दे। Give them the love. Thank them for all their contribution. उनका आभार करें, Now they are free. धन्यवाद दें उनको और उन्हें मुक्त करें अपने मोह के बंधनों से। And we wish them luck for their journey ahead. उनको उनकी यात्रा पर आगे जाने दें।
We know we are one. We are the same consciousness. Therefore, there is no separation. उनसे कहें कि हाँ, हम जानते हैं हम एक ही चेतना का हिस्सा हैं, इसलिए हम अलग अलग कहाँ हैं। उन्हें मुक्त करें। Last 1 minute. Taking 3 long, deep breaths. 3 गहरी सांस लें। Your nose. नाक Hold से it for गहरी a सांस while लें and breathe out from your mouth. और मुंह से सांस बाहर छोड़ें। Coming back here. With stronger sense of surrender. With deeper realization that whenever death will knock at my door, I will welcome the guest. And it is okay to welcome such guest. अनुभव करें कि जब भी मृत्यु आएगी, हम बाहें फैलाकर उसका स्वागत करेंगे। Opening your palms and keeping your palms on your eyes अतिथि की for 5 तरह। seconds. And पूरे समर्पण gently के open साथ your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। With a smile. We're grateful to this life. We're grateful to death. मुस्कुराएं, जीवन के प्रति कृतज्ञ हों, मृत्यु के प्रति कृतज्ञ हों। Let us stretch our body. Let us be fully in the body. Yes. शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, फैलाएं, हाथ पैरों को हिलाएं, वापस अपने शरीर में आ जाएं। Wonderful. Excellent. Let us all give an applause to this practice of meditation. Wonderful. अपने अनुभव के लिए ताली बजाएं। So friends, I'm open to take up some questions and maybe some experiences also. And before you leave for सरोज जी का स्वागत है। सचिन की तरह से कहें आहा। बिल्कुल। सरोज जी सुन रहे हैं? आप अपनी शेयरिंग करें डॉक्टर रवि।
सबसे महत्वपूर्ण आज के सत्र में जो एडिशन हुआ आपके द्वारा, उसका हिंदी रूपांतर, उसने सत्र में बने रहने में बहुत मदद की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज का सत्र बहुत ही अलग अनुभव देने वाला रहा। बस सरोज जी शायद सो गए हैं। तो समाप्त किया जाए।